Hello everyone, this is the 6th lecture of Electrostatics, and in this lecture we will discuss about Gauss Theorem and its proof. So in the previous video we learned about electric flux, right? So what is electric flux? Electric flux is simply the number of field lines passing normally through a surface area, right? So that was electric flux, ठीक है. Now अब इस लेक्चर में हम गॉस थ्योरम के बारे में जानेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट. सो बिफोर डिस्कसिंग गॉस थ्योरम हम लोग देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है और हमें गॉस थ्योरम की ज़रूरत कैसे पड़ती है, ठीक है. सो इन जनरल मान लेते हैं हमारे पास कोई सरफेस दिया हुआ है जिसका लेट्स से एरिया, लेट्स से इट इज़ एस, राइट. सो लेट्स मेक इट एस हियर, ठीक है. नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ठीक है, हमें करना क्या है, ई एस एंड देन कॉस थीटा लगाना है, राइट. इट्स वेरी सिंपल बिकॉज the electric field is constant, the surface area we can find out with the help of the parameters, ठीक है. And finally theta is the angle between S and E, which is, let's say in this case it is 0 degree, right. So it's very simple. Now basically अगर कोई मान लेते हैं हमारे पास कोई general closed surface है like this. Now in order to find out, let's say a charge is over here, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, and then finally इसकी वजह से जो भी फील्ड लाइंस होंगी दिस विल लुक समथिंग लाइक दैट, राइट. नाउ वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम. नाउ वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर. इस केस में हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. बिकॉज इन हियर थीटा जो हमारे पास है ये वेरी कर रहा है, ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट, दैट मीन दिस इज ऑल्सो वेरिंग, राइट. सरफेस एरिया इज कॉन्स्टेंट, दैट्स ओके फाइन. जो भी सरफेस एरिया है दैट इज कांस्टेंट, बट थीटा एंड ई इज वेरिंग, दैट मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर सच केसेस, एंड दैट इज वेयर दिस गॉस थ्योरम कम्स इन, ठीक है. इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गॉस थ्योरम आता है, ठीक है. नाउ लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है. तो क्या स्टेट करता है? सो लेट्स से इट स्टेट्स दैट, let me write down its statement first. So it states that the total electric flux passing through an enclosed surface is equals to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within that surface, right. Now what is this statement saying? ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, right. So in such cases, ठीक है, this is not 2D surface, this is a 3-dimensional closed surface, ठीक है. So यहाँ पर कुछ यहाँ पे terms जो यूज किए गए हैं पहले वहाँ फोकस करो. that is enclosed surface, right. the first one was enclosed surface and then it is 1 by epsilon naught times. तो कहना ये चाह रहा है कि अगर हमें किसी भी enclosed surface से टोटल फ्लक्स निकालना है, सो दैट फ्लक्स कैन बी गिवन बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इज व्हाट, इनटू का मतलब होता है टाइम्स जो भी इस पर्टिकुलर सरफेस ने जो भी चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है. इन आर केस इट इज क्यूब, लेट्स से. सो जो भी फ्लक्स होगा दैट विल बी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, राइट. दैट द टोटल फ्लक्स which is passing through an enclosed surface is 1 by epsilon naught times the total charge. और ये जो चार्ज होना चाहिए ये उसी सरफेस के अंदर enclosed होना चाहिए. So the last line which says कि जो चार्ज होना चाहिए that is the total charge enclosed within that surface, right. So this is the mathematical form of Gauss theorem and this is its statement, right. So again, what's the statement? It states that the total electric flux, that is total electric flux through the surface is 1 by epsilon naught times through the times the total charge enclosed within that surface, right. So I hope you have got to understand what is Gauss theorem, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा Gauss theorem क्या है, right. Now in the next what we are going to discuss is a very simple problem, ठीक है. एक question है which has been repeatedly asked in the CBSE
question papers, right? So let's see what is that question. But before we discuss that question, let's see its proof now. ठीक है, इसका हम proof देखेंगे कि what is the proof of Gauss theorem, right? So in order to prove Gauss theorem, हम लोग एक charge consider करेंगे. Let's say this is a charge Q. Okay, let's make it Q here. ठीक है, एक charge है, and we have to find out the electric flux through this sphere. ठीक है, ये एक sphere मैंने यहाँ draw किया हुआ है, और इस sphere से हमें क्या निकालना है? Total flux निकालना है, right? Now because of this chart, the electric field lines will be radially outward, right? So it will look something like that. Okay, so ये radially outward होगा electric field lines, no problem at all, right? Now हमें electric flux निकालने के लिए जो formula है, that is phi is equals to E and then integration of E ds cos theta. So this is our formula to find out electric flux. Now see here कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? एंड लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल सरफेस. ठीक है, और इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा दैट विल बी लेट्स से डी एस. ठीक है, अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर टू मेक इट मच मोर क्लियर. ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया लाइक दैट. ओके, एंड वी हैव कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल सरफेस एंड दिस इज लेट्स से डी एस, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा जीरो, नॉट ओनली एट दिस पॉइंट बट ऑल्सो एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस. ठीक है, हर एक पॉइंट पे या हर एक पॉइंट यहाँ पे सरफेस पे जो थीटा होगा दैट विल बी जीरो. सो इन आर केस इट इज जीरो फॉर एवरी पॉइंट, राइट? So now हमें करना क्या है? Simply we have to integrate and at the same time the distance E or the distance let's say R at every point is same. और अगर R same रहेगा तो electric field भी क्या हो जाएगा? It is also a constant, right? So phi is equals to E is a constant, so that's why ये बाहर आ जाएगा, and then integration of ds, right? Because cos theta कितना हो गया? So cos 0 degree is 1, right? Now the flux, that is flux, is given by E into simply S. That is the statement, E into S. Now what is electric field? So electric field due to this charge at that point, right, at a distance of R, what it will be? It will be simply let's say 4 pi R square, let R be the radius, ठीक है, or times the, let's say this is okay fine, let me write down 1 by 4 pi epsilon naught, then Q, which is capital Q over R square. ठीक है, so this is electric field. Now what is the surface area? So it's a sphere. ठीक है, ये sphere है, तो जो भी surface area होगा that is 4 pi R square. So this is the surface area and this is the electric field. Now see the cancel term. ठीक है, तो ये जो अपने पास 4 pi R square है, 4 pi R square है, cancel out हो जाएगा. So the remaining term will be simply Q by epsilon naught. Now remember the statement of Gauss. Gauss ने क्या कहा था? Gauss stated that the flux is 1 by epsilon naught times the total charge, and in our case it is also the same thing. ठीक है, so this is the proof of Gauss's theorem, right? Very simple proof. ठीक है, हमें करना क्या है? Simply we have to consider a sphere of radius r, then at that point on the surface we have to find out the electric field, और electric field निकालने के बाद उसके एक्सप्रेशन को हम surface area को इंटीग्रेट करने के बाद हम उसे simply cancel out कर देंगे, so we'll get our Gauss's theorem statement, right? Okay, now that we have discussed its proof, ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे which is very important from Gauss theorem. Okay, so let's see what that question is. Okay, so the question is very simple one कि हमें यहाँ पे एक square दिया हुआ है, square, right? So this is square which is having side of A. ठीक है, तो ये square है और इससे related हमें जो side दिया हुआ है that is A. Now इसके half पे that is at a distance of A by 2. ठीक है, A by 2 distance पे यहाँ पे एक charge रख दिया है Q. ना पूछा गया है, बताइए इस सरफेस से, ये जो सरफेस है इससे फ्लक्स कितना पास करेगा. दैट मीन्स वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द फ्लक्स. ठीक है, इस सरफेस से हमें फ्लक्स निकाला गया. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज वी कैन नॉट यूज दिस सिंपल फार्मूला. हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते. द रीजन इज वेरी सिंपल वन. फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा इज नॉट कॉन्स्टेंट, एट द सेम टाइम this one E is also not constant. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम different angles पे जाएंगे नॉर्मल भी बदलता जाएगा, right? So this theta and E will vary.
राइट। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं कि हम इस पर्टिकुलर सरफेस को एनक्लोज बनाएंगे। कैसे? बाय ड्राइंग अ हाइपोथेटिकल क्यूब। ठीक है। सो ये जो हमारा सरफेस था जिससे हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, हमने चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। सो देयर वी हैव द चार्ज। नाउ इस चार्ज को इस सरफेस ने, दैट इज क्यूब ने, एनक्लोज कर दिया है। ठीक है। और जैसे ही एनक्लोज सरफेस हुई, नाउ वी कैन यूज आवर द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स। ठीक है। सो बेसिकली गॉस क्या बोलता है कि द टोटल फ्लक्स, that is the flux through the total part of this cube is 1 by epsilon naught times the total charge. This is a statement from Gauss. ये गॉस थ्योरम कहता है। ठीक है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना फ्लक्स एक फेस से पास होगा उतना ही फ्लक्स ये 6 के 6 फेसेस से पास होगा। मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा वो 6 टाइम्स होगा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। ये जो सरफेस है, क्योंकि सारे सरफेसेस क्यूब में सेम होते हैं, सेम एरिया होता है, तो इसीलिए जो फ्लक्स होगा वो 6 टाइम्स हो जाएगा इस सरफेस के। इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा, दैट इज दिस, इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स द फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर 1। सो दैट इज आवर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, और ये है फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। नाउ वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि सेम ही है, राइट। दिस इज ऑल्सो फ्लक्स, दिस इज फ्लक्स थ्रू द दिस वन क्यूब। ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करने से क्या मिल जाएगा? सो इक्वेट करते ही 6 टाइम्स द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, दैट इज दिस वन, इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो हमें निकालना क्या है? दैट इम्प्लाइज कि जो फ्लक्स होगा, दैट इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ओनली, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी सरफेस से फ्लक्स निकालना था, राइट। सो द फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस विल बी 1, दैट इज क्यू अपॉन 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है। जो भी चार्ज देता है आप चार्ज, दिस इज जस्ट एक्सप्रेशन ओनली। ठीक है। अगर आपको चार्ज की वैल्यू दी हुई है, यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है। So this expression and that expression I have equated in here. ठीक है। मैंने equate किया हुआ है and that is how this equation came out. ठीक है। ये है 6 times the total flux through a surface, क्योंकि हर एक फेस सेम होगा, और ये है फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, बिकॉज नाउ दिस इज एन एनक्लोज सरफेस। अर्लियर ये एक ओपन सरफेस था, तो इसीलिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता था, इसीलिए गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए मुझे इस सरफेस को क्लोज करना पड़ा। ठीक है। तो रिमेंबर कि जब भी गॉस थ्योरम लगेगा, इट विल बी ऑलवेज अप्लाइड ऑन enclosed surface. Okay, so this is one such numerical which is very important. So I hope you guys have understood what is Gauss theorem. In the next lecture we will discuss about its applications. Okay, so see you guys in the next lecture. Till then, keep learning.